Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Anchal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we were discussing the topic that was the last topic that we did was smileys, okay, and the kitchen appliances. So these two topics we have discussed in our previous session. So today I am going to start with the revision part from the next topic, that is rocks and metals. Okay, so this is the next topic that I am going to discuss with you all. So class, kindly open your books at page number 66, that is rocks and metals. So I am just writing the topic on the board, that is rocks and metals. Okay, so this is the topic that I am going to start, okay, in today's session, and this is given at page number 66, rocks and metals. Okay, so first of all, that what is the meaning of the topic rocks and metals? इसका मतलब क्या है? So the meaning of the topic rocks and metals is, in this we will discuss about the various forms of rocks or the various metals that are being used. Okay, बहुत सारे metals हैं, बहुत सारे rocks हैं जो कि use किए जाते हैं. Okay, so as I can see, as we can see all around us, तो हमारे अगल बगल you can find the number of metals. Okay, so different kind of metals you can see, मतलब जो iron है, gold, silver, all these are the metals. Some other the kind of metals. इसके अलावा you have seen the different types of rocks. Okay, जैसे graphite and so मतलब these all rocks and metals, इसकी बनी हुई चीज़ें we are using already in our daily life. Okay, so today we will talk about some of the things that are made of different rocks and metals. Okay, so here the heading is given. Here are some objects made of different metals. Guess the name of the metals from the pictures and clues given and write them from the help box given below. Okay, so as we can see here, some pictures are given, okay, that are made of different metals. तो अलग अलग मेटल से बनी हुई कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. Okay, now you have to guess the name of the metal. Okay, by looking at the picture we have to guess the name of the metal and write the metal. मतलब by looking at the picture we will guess the name of the metal from which that particular thing or that particular object is made. Clear? Starting with the first one. Okay, so this is the first picture you can see here. So what is this? A silvery white metal used in making cans to contain drinks or food. Okay, so now the metal we are talking about, okay, it is in silver color. So it looks like it is in silver color. तो ये चांदी की कलर का होता है एंड इट इज़ यूज टू मेक फॉर मेकिंग कैंस टू होल्ड टू कंटेन ड्रिंक्स एंड फूड. ओके, तो और इसको यूज़ किए इसलिए किया जाता है, दिस मेटल इज़ बीइंग यूज्ड to make containers where one can store drinks and one can store drinks and food. So what is the name of the metal? That is tin. So the answer is tin. तो देखिए tin का आपने देखा होगा, you must have आपने कोल्ड ड्रिंक्स पी होंगी बेटा, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठीक है, घी के बड़े बड़े जो बॉक्स हैं वो कंटेनर्स होते हैं. सो ऑल दोज आजकल प्लास्टिक के भी आते हैं, बट कैंस जो कैंस होती है बेटा दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ टीन. ओके, तो जो कैंस आप पीते हो कोल्ड ड्रिंक की कैंस होती हैं, ओके, दे आर मेड अप ऑफ द थिंग दैट इज, ओके, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, जब आप उसको थोड़ा सा प्रेस करते हो तो एकदम से पिचक जाता है. सो दैट कैन इज़ अ वेरी सॉफ्ट, सॉरी दैट टेन इज़ अ वेरी सॉफ्ट वन. ओके, डिपेंड्स अपॉन दैट कितना आपने उसकी थिकनेस, इसकी कितनी थिकनेस है उसकी. ओके, इट कैन बी हार्ड, इट कैन बी सॉफ्ट एज वेल. सो बेसिकली द कैन इज मेड अप ऑफ टीन. The answer of the first is a silvery white metal used in making cans to contain drinks and food, that is tin. So the answer of the first, okay, it's not the first, A part, that is tin. Okay,
that is tin. Tin, tin. So the answer of the first is tin, tin. Clear? Moving next to the second one. Okay, the second is a white precious metal used in making coins, ornaments and the jewelry. So now we are talking about one of the metal that is used in making coins, ornaments and jewelry. हम ऐसे एक मेटल की बात कर रहे हैं जिससे कि द कॉइन्स दैट यू सी, देखिए कॉइन्स जो सिक्के जो आप देखते हो, मनी कॉइन्स, ओके, सिक्के आप देखते हो, ठीक है। उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड द ज्वेलरी, ठीक है। तो वो ज्वेलरी बनाने के लिए, गहने बनाने के लिए भी दैट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड, ओके। सो व्हाट इज दैट मेटल, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मेटल? सो दैट इज अ सिल्वर. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिल्वर. सो वी यूज सिल्वर. ओके, सो देखिए जो कॉइन्स हैं दैट मतलब जो सिक्के होते हैं 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, ओके। सो ऑल दीज कॉइन्स दैट आर मेड अप ऑफ अ मेटल दैट इज सिल्वर. तो वो सिल्वर से बने हुए हैं, ओके। सो ऑल दी कॉइन्स दे आर मेड अप ऑफ सिल्वर. तो उनको रिफाइन करके, ओके, सो आफ्टर रिफाइनिंग इट दैट कॉइन इज मेड, ओके। उसको मतलब उसकी बहुत सारी प्रोसेस, लंबे प्रोसेस के उस सिल्वर को बहुत ही प्यूरिफाई करके उसको रिफाइन कर करके दैट इज मेड लाइक दिस एंड दैट इज सिल्वर, ओके। एंड दैट इज मेड अप ऑफ सिल्वर. द कॉइन्स आर मेड अप ऑफ सिल्वर. यू हैव ऑल्सो सीन द वेरियस ऑर्नामेंट्स इन द ज्वेलरी दैट आर मेड ऑफ सिल्वर, लाइक स्पेशली द एंकलेट्स. आपने एंकलेट्स देखे होंगे, दे आर मेड ऑफ सिल्वर, ओके। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हाथ में कड़ा वड़ा पहनाया जाता है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिल्वर. सो ऑल दीज ऑर्नामेंट्स एंड द ज्वेलरी एज वेल एज कॉइन्स, they all are made up of a metal that is known as silver. So the answer of the B part is silver. That is silver. Silver को हम क्या बोलते हैं? चांदी. We call silver as चांदी. तो देखिए टिन को इंग्लिश में भी टिन बोलते हैं, हिंदी में टिन बोलते हैं, ओके। एंड सिल्वर को इन हिंदी we call silver as चांदी, जिसको हम चांदी बोलते हैं. Next, another very precious metal now we are going to discuss, that is a bright yellow precious metal used in making jewelry, okay. एक bright, एक चमकीला पीले कलर का मेटल जो कि ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किया जाता है. सो व्हाट इज दैट मेटल? दैट इज gold. So we are talking about the gold. So I have the gold, that's what I can show you. So this is, you can see this gold is this is a gold, okay, and it is in the yellow color, you can see, and it's a bright, okay. तो आप थोड़ा सा भी इसको शाइनिंग में करोगे, it will वो स्पार्क शाइन करना शुरू कर देगा. इट्स अ ब्राइट येलो मेटल एंड इट इज़ वेरी प्रीशियस, ओके. यू नो कि जैसे आजकल जो गोल्ड की प्राइसेस हैं, दे आर हाइकिंग डे बाय डे. सो अ ब्राइट येलो प्रीशियस मेटल यूज इन मेकिंग ज्वेलरी. तो एक चमकीला येलो कलर का, पीले कलर का मेटल जो कि ज्वेलरी बनाने के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है, एंड दैट इज़ वेरी कॉस्टली एज वेल, एंड प्राइसिंग its price keep on changing. So what is the name of that metal? So the name of this metal is, this is gold. So now we are talking about the gold. So गोल्ड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वी कॉल गोल्ड एज, इसको बोलते हैं सोना. गोल्ड को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज सोना, ओके. सो द ब्राइट येलो प्रीशियस मेटल यूज इन मेकिंग ज्वेलरी इज गोल्ड. सो द आंसर ऑफ द सी पार्ट इज गोल्ड. GOLD, दैट इज गोल्ड, जिसको हम सोना बोलते हैं, दैट इज गोल्ड. चलिए मूविंग नेक्स्ट to the D part. Electric wires are commonly made of this metal. So electric wires जो होती है बेटा, वो ज़्यादातर इस metal की बनी होती हैं. So what is the name of the metal? So electric wires are made up of copper. तो किसकी बनी होती है? कॉपर की. आपने इफ यू हैव यूज, तो देखिए कोई लगी हुई तार जो कि जिसमें करंट हो, उसको ना देख के, अगर आपके पास कोई वेस्ट छोटा मोटा पीस पड़ा है वायर का,
ओके, यू कैन जस्ट कट इट, उसको थोड़ा सा काट के देखेंगे, यू विल सी द कॉपर कलर, कॉपर इज द लाइट अ ब्राउनिश कलर की, ब्राउन कलर की एक वायर आपको उसके अंदर नजर आएगी, बहुत सारी पतली पतली वायर्स दिखेंगी, सो दैट इज अ कॉपर, ठीक है। तो द कॉपर इज अवेलेबल इन वेरियस थिकनेस। तो कॉपर की जो वायर्स होती हैं वो अलग अलग थिकनेस की होती हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, कुछ एकदम ही सॉफ्ट होती हैं। सो डिफरेंट थिक यू कैन फाइंड द थिकनेस ऑफ कॉपर, मतलब अलग अलग थिकनेस की कॉपर वायर्स यू कैन सी। ओके, तो बेसिकली जो वायर्स होती हैं, क्या आपने देखा होगा, जो वायर्स के अंदर बेसिकली बेटा वायर्स ऊपर से वो नो दैट रबर और द प्लास्टिक, नॉट प्लास्टिक रबर होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो रबर होता है, तो उसको हम अगर कट करेंगे हल्का सा, तो यू विल सी दैट कॉपर वायर इन इट। ओके, तो स्पेशली जब भी हम किसी प्लग में उसको वायर को लगाते हैं, सो व्हाट वी डू, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रीशियन और वट एवर दो, जो चाहे इलेक्ट्रीशियन हो या घर में छोटा मोटा प्लग का भी लगाना होता है, तो पापा क्या करते हैं, मेरे पापा या मम्मा, ओके, दे जस्ट कट द वायर लिटिल बिट, ओके, एंड उसको निकाल देते हैं, उसके ऊपर जो प्लास्टिक होता है या सॉरी रबर होता है उसको जस्ट पील ऑफ करते हैं, एंड देन यू विल सी ब्राउन कलर की छोटी छोटी वायर्स होती हैं, एंड देन वो उसको प्लग में डाल के एंड उसको बोल्ट करके एंड ये देन यू कैन सी द प्लग। सो स्पेशली जो करंट, द करंट दैट पासिस इन द वायर्स, दैट पासिस थ्रू दैट कॉपर, ओके, जो किसी भी वायर में कोई भी करंट दैट पासिस इनटू एनी वायर, एनी काइंड ऑफ वायर दैट पासिस थ्रू दैट कॉपर वायर, ओके, तो किसी भी वायर में जो भी करंट पास होता है, दैट पासिस थ्रू द कॉपर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दैट वायर। ओके, सो here the question is electrical wires are commonly made of this metal। ओके, जो इलेक्ट्रिक की वायर्स होती हैं ये ज़्यादातर इसी मेटल की बनी होती है, यू कैन फाइंड दिस मेटल इनसाइड दैट इलेक्ट्रिक वायर। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेटल, दैट इज कॉपर। सो द आंसर इज कॉपर। Okay, this is the D1, copper, C-O-P-P-E-R, C-O-P-P-E-R, that is copper, that is copper। चलिए, now moving next, most commonly found metal used to make steel। ओके, आपने देखा होगा स्टील, ओके, सो जो स्टील है वो किस मेटल से बनता है, सो स्टील इज मेड अप ऑफ आयरन, लोहा। जो स्टील है बेटा, दैट द स्टील यूटेंसिल्स वी यूज, ओके, दैट इज मेड अप ऑफ आयरन। तो आपको कि मैम आयरन तो लोहा होता है, दैट इज इन, वो तो बहुत ही हार्ड, और स्टील इज डिफरेंट। ओके, तो यू कैन एक्चुअली द स्टील इज द रिफाइंड फॉर्म ऑफ आयरन। तो जो स्टील है वो एक्चुअली जो आयरन की, लोहे की एक रिफाइंड फॉर्म है। ओके, सो स्टील इज एक्चुअली द रिफाइंड फॉर्म ऑफ आयरन। ओके, सो मोस्ट कॉमनली फाउंड मेटल यूज इन द स्टील इज दैट इज आयरन। सो जो आयरन होता है बेटा उसको बहुत ज़्यादा रिफाइन करके, ओके, सो द आयरन इज रिफाइंड एट वेरियस स्टेज, रिफाइंस मीन्स उनको साफ करके उसकी जो काफ़ी सारी लेयर्स हटा के दे एक्सट्रैक्ट स्टील फ्रॉम इट। क्योंकि जो आयरन को बहुत ज़्यादा रिफाइन करके उसकी जो बहुत सारी लेयर्स हैं उसको काटते 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 दे एक्सट्रैक्ट स्टील फ्रॉम इट। ओके, सो यू कैन से दैट मोस्ट कॉमनली फाउंड मेटल यूज्ड टू मेक स्टील इज दैट इज आयरन। सो आयरन इज द स्टील इज द स्टील इज एक्सट्रैक्टेड from iron only by refining it at various stages। Okay, so the answer of the E part is iron, that is iron, I-R-O-N, that is iron। So steel is the refined form of iron। Okay, chaliye, so these are the answers from page number 66। Okay, so these are the various types of metal that we commonly use, okay, that we are, okay, so the materials that are made of these and these metals that we are already using in our daily life। Okay, so again I'm just giving you a quick recall। The first is tin, and in Hindi we call it as tin only। Second is silver we call it as chandi। Third is gold, so gold is sona। Fourth is copper is
कॉपर ब्राउन, आई डोंट नो द हिंदी, कांस्य, ऐसे कांस्य बोलते हैं, द कॉपर इज नोन एज द कांस्य, and the next is the iron that we call it as loha. Okay, so here a very tidbit is given, and that is a very important one, so kindly revise all the tidbits that is given in your book very properly. So the first tidbit that is given over here is the study of minerals is called mineralogy, the study of rocks is called geology. Okay, देखिए जैसे इफ़ समबडी अगर कोई एनिमल्स के बारे में पढ़ता है या प्लांट्स के बारे में पढ़ता है, ओके, इफ सम देखिए ऑल दीज एनिमल्स मिनरल्स दीज आर द सॉरी दिस बॉटनी जूलॉजी, ये सब क्या है, जैसे हमें मिनरलॉजी और जियोलॉजी दी ऑल आर द पार्ट ऑफ साइंस, ये सब साइंस का पार्ट है, बट दे आर द कह लीजिए कि जैसे अगर कोई मिनरल्स के बारे में कोई स्टडी करता है, ओके, सो दैट मीन्स दे आर स्टडिंग मिनरलॉजी, सो दैट मीन्स मिनरलॉजी इज अ सब्जेक्ट, ओके, जो जैसे बेटा हम हिंदी साइंस मैथ्स पढ़ते हैं, वैसे ही मिनरलॉजी इज अ सब्जेक्ट इन विच वन लर्न्स अबाउट और इन विच वन मेक अ डिटेल स्टडी अबाउट द वेरियस मिनरल्स, ओके, तो ये मतलब वो उनकी कहते हैं ना बाल की खाल, मतलब वो दे जस्ट मेक एन लर्न, दे जस्ट लर्न ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द मिनरल्स, ओके, एंड दे गेट ऑल दिस from the that they can learn all these things while studying the mineralogy. Okay, if someone is interested in studying about the minerals, they are going to study mineralogy. So mineralogy is the name of the subject. Second is if someone wants to make the wants to have the detailed study of rocks, अगर किसी को रॉक्स जो अलग अलग पत्थर हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करनी है, ओके, दे आर गोइंग टू टेक जियोलॉजी. जियोलॉजी इज ऑल्सो a subject. Geography is different, geology is different. So if someone studies about the rocks, okay, they have to study geology, and if someone interested in studying minerals, they are going to that person is going to learn mineralogy. Clear? ओके, जैसे ही अगर कोई एनिमल्स के बारे में सारी स्टडी करता है, सो दैट मीन्स दे नीड टू स्टडी जूलॉजी, तो जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं दैट इज सब्जेक्ट इज नोन एज जूलॉजी. तो वेयर एज इफ समवन स्टडीज अबाउट द सब्जेक्ट or the study of you can say the study of animals is called zoology, the study of plants is known as botany. ऐसी बेटा बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स को डिवाइड किया गया है इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ओके, उनको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया. चलिए, सो नेक्स्ट दिस वाज गिवन एट पेज नंबर 66. Now at the page number 67, which is the part of this topic only. Okay, so here in this we have discussed about the various matters, whereas on the page number 67 we are going to talk about, we are going to learn about the various kinds of rocks. Okay, the topic is same, that is rocks and matters. The page number is now 67. Okay, so now the next page is 67, and on page number 67 we will discuss about, or we will learn about the various kinds of rocks. हम अलग अलग तरह की जो rocks हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. Clear? Okay, so as I can see the heading that is given here is, and now rocks. Okay, so before this we have learned about the various metals. Now we are going to learn about the rocks. Okay, how much do you know about the rocks and the stones? Choose the word given in the box to fill in the blanks. Okay, so let's today, okay, so in the next topic we will discuss about the various kinds of rocks. Okay, so the first is dash is a fossil fuel that is found in the mines and is rich in carbon. Okay, so now we are talking about the one of the rock that is made up of fossil fuels. फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं बेटा? फॉसिल फ्यूल्स जो पुरानी चीज़ें जब तबाह हो जाती हैं, तो जब वो धरती के अंदर दब जाती हैं, ओके, फॉसिल फ्यूल्स मतलब डेड्स ऑफ एनीथिंग, दैट मे बी ऑफ प्लांट, दैट मे बी ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट मे बी ऑफ एनिमल, सो एनीथिंग दैट इज डेड एंड बuried अंडर द अर्थ, दे आर नोन एज द फॉसिल. ओके, उनको फॉसिल बोला जाता है. एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओके, बहुत ही लंबे समय के बाद जब उन फॉसिल्स को जब वो जो डेड्स हैं उनको जब खोदा जाता है, यू कैन फाइंड द कोर आउट ऑफ इट. ओके, सो दैट इज अ फॉसिल फ्यूल दैट इज फाउंड इन माइंस एंड रिच इन कार्बन. ओके, सो दैट इज
कोल. सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट इज कोल. तो देखिए कोल कैसे बनता है, जो कोल या कोयला जिसको हम बोलते हैं वो कैसे बनता है. द कोल इज मेड अप ऑफ द फॉसिल्स. तो पुराने जो बचे हुए फॉसिल्स हैं या पुरानी जो दबी हुई डेड्स हैं उनको जब निकाला जाता है दे वी कॉल इट एज fossil. Okay, and that are found in mines. Okay, so you have must have heard about the various mines कोयले की खदान जिसको बोलते हैं. So mines is खदान and rich in carbon and you will find the carbon in it. Okay, so the coal that is rich in carbon. So the maximum part of carbon is present inside the coal only. Okay, इसलिए जो भी कोल माइंस में काम करते हैं समटाइम दे सफर सफोकेशंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन इट. तो उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन होता है जिसकी वजह से जो कोयले की खदान में जो काम करने वाले होते हैं तो उनको ज़्यादातर दे जस्ट हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम. को कई बार ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है बिकॉज दी डेंसिटी ऑफ कार्बन इज़ मोर इन अ कोल माइन. एक कोयले की खदान में जो कार्बन है जो कार्बन है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है जिसकी वजह से समवन मे सफर द प्रॉब्लम ऑफ ब्रीदिंग. ओके, सो दैट द डैश इज अ फॉसिल फ्यूल दैट इज फाउंड इन माइंस एंड रिच इन कार्बन. सो दैट इज कोल. कोल इज कोयला. सो कोयला माइंस में मिलता है. कोयले की खदान कोयले को वहाँ से खदानों में जाके वो तोड़ते हैं जिसमें सेम यू विल फाइंड द डायमंड एज वेल. तो डायमंड कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द कोल माइंस ओनली. ठीक है, बट this coal mines that coal is rich in carbon also. So the first fossil fuel or the first rock that we are talking about, that is coal. Coal is कोयला. कोल को हम क्या बोलते हैं, that is कोयला. Coal is कोयला. Okay, चलिए moving next to the second one. Okay, second is B. The ash is the hardest natural substance found on the earth. Okay, so now we are talking about another very hardest substance that is found on the earth. तो धरती के ऊपर पाए जाने वाला सबसे हार्ड सबसे ठोस सब्सटेंस कौन सा है. So the hardest substance that we can find on the earth is diamond. Diamond is the hardest substance that we can found on the earth. Okay, and you know जो diamond है वो कहाँ मिलता है. Diamond can be found on in the coal mines only. तो जैसे अभी हमने first किया था that is coal mines. So we can find coal. देखिए ऐसा नहीं कि हर थोड़ी सी बस उसमें कोल में डायमंड जो निकलते रहते. नो, कई बार क्या होता है कि जो कहते हैं ना कि जो हीरा है डायमंड है दैट इज इन द कोल. ओके, तो जब भी जो कोल माइंस जब उसकी खदानों की खुदाई होती है तो उसमें ज़्यादातर जो हीरे जो प्योर डायमंड है दैट कैन बी फाउंड हियर ओनली. ओके, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फॉसिल्स. ओके, एंड दिस इज द डायमंड इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस मेटल. ओके, सबसे महंगा नॉट मेटल रॉक है, सबसे प्रीशियस सबसे महंगा एक रॉक है. ओके, एंड दैट इज फाउंड इन द कोल. और वो कहाँ पाया जाता है, कोल माइंस में. Okay, so we can find the diamond in the coal mines and diamond is one of the hardest substance on the earth. दुनिया के ऊपर सबसे ठोस substance कौन सा है, that is diamond. So the B is that is the hardest natural substance found on the earth, that is diamond. So the answer of the B one is that is diamond. Clear? Moving next to the C part. The Taj Mahal is made of dash. Okay, so you must have seen the Taj Mahal. हो सकता है कि आप में से कई ने देखा भी हो. So देखिए जो ताज महल है that is located in Agra, but it is made up of a very fine marble. So that is, what is the name of that marble? That is संगमरमर, जिसको हम संगमरमर बोलते हैं. Okay, so that is made up of संगमरमर. ओके, तो दिस इज अ मार्बल. सो द मार्बल से बना हुआ है. जो मार्बल इज ऑल्सो अ रॉक. ओके, सो मार्बल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ रॉक. ओके, बट देखिए जो मार्बल्स होते हैं उसकी भी बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्बल्स. ओके, कुछ मार्बल्स होते हैं जो कभी भी पीले नहीं पड़ते, कुछ होते हैं जो थोड़ी देर के मतलब यूज़ करने के बाद वो येलोइश हो जाते हैं. ओके, सो बट यू हैव एवर थॉट अबाउट दैट विच इज़ द
जो इस द ताजमहल दैट इज मेड अप ऑफ अ मार्बल दैट इज नोन एज संगमरमर। तो संगमरमर पत्थर से बना हुआ है जो कभी भी जल्दी पीला नहीं पड़ता, बट नाउ ड्यू टू द ओवर पॉल्यूशन ओके दैट इज ऑल्सो बिकमिंग येलोइश। ठीक है, आज भी वो थोड़ा मतलब नॉट ताजमहल इज इन प्योर ये वाइट कलर में था, बट अब आजकल पॉल्यूशन की वजह से जो उसका भी जो कलर है दैट इज बिकमिंग येलोइश, बट the Taj Mahal is made up of a marble that is known as Sangmarmar. So that is marble. Okay, we are talking about the rocks. So in spite of writing the Sangmarmar, we will write the type of the thing with that Taj Mahal is made. So Taj Mahal is made up of marble. Taj Mahal is made up of marble. Moving next to the D part. Dash is the molten rock that comes out from volcanoes. Okay, so the question is that is a molten rock that comes out of volcanoes means ज्वालामुखी। सो volcanoes आपने सुने होंगे, तो volcanoes को हिंदी में क्या बोलते हैं, we call it as ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी बेटा जब उसमें से लावा निकलता है, सो जब वो लावा निकल के बाहर आता है, देखिए लावा बहुत ही गर्म होता है ओके, एंड इट्स टेम्परेचर इस हीटिंग टेम्परेचर इज़ वेरी हाई ओके, तो वो कुछ भी जो उसके रास्ते में आता रहता है तो उसको तबाह करता हुआ जाता है। बट व्हेन दैट लावा कूल्स डाउन, जब वो लावा ठंडा हो जाता है, देन इट टेक्स अ शेप ऑफ अ वेरी हार्डेस्ट रॉक, तब वो एक बहुत ही ठोस रॉक, एक पत्थर की शेप ले लेता है ओके। सो व्हाट इज दैट, तो वो क्या है, सो दैट इज द आंसर सॉरी, सो दैट इज अ लावा ओके। तो देखिए जब व्हेन दैट इज अ मोल्टेन रॉक दैट कम्स आउट ऑफ द वॉल्केनो, तो ये एक मोल्टेन रॉक है ओके, एक लावा की तरह एक रॉक है जो कि वॉल्केनो से जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से जब लावा निकलता है, एंड धीरे धीरे जब वो देखो उसको ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे वो ठंडा होता है तो वो एक पत्थर की शेप ले लेता है। सो दैट इज लावा, दैट इज लावा। सो द आंसर ऑफ द डी पार्ट इज lava, L-A-V-A, that is lava. Moving next to the E1, pencil leads are made of, जो पेंसिल की लीड्स आप देखते हो ब्लैक कलर की, वो लीड किस चीज़ की बनी होती है, सो द पेंसिल लीड्स आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट ओके। जो जो ब्लैक कलर की लीड्स आप देखते हो पेंसिल की, सो दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। So pencil leads are made up of graphite. वो कौन सा पत्थर होता है, that is also made up of rock, and that rock is known as graphite. That is graphite. Okay. चलिए, the next is F. F part is, the F is dash is igneous rocks used to make buildings. Okay, so now we are talking about another rock that is used to make buildings. So the igneous rocks that is used to make building is, that is granite. Okay, so we use granite to make buildings. So igneous rocks is used to make building. तो building बनाने के लिए जो rock use की जाती है, that is that okay, that this is a type of igneous rock, तो ये igneous rock की type है ओके। सो दैट इज ग्रेनाइट, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट। सो we use granite for making buildings okay। this is another one type of a rock, that is granite okay। moving to the next blank, chalk is a type of, so you must have seen the chalk, जो white chalk जो हम लिखने के लिए यूज करते हैं, सो वो किस चीज़ की टाइप है, सो दैट इज अ टाइप ऑफ अ लाइमस्टोन ओके। तो वो लाइमस्टोन एक लाइम पत्थर, देखिए जो चॉक भी यूज, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ रॉक, बट द रॉक इज डिफाइंड, उसको रिफाइन करके द चॉक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। सो डैश द चॉक इज अ टाइप ऑफ अ लाइमस्टोन, chalk is the type of a limestone. Chalk is a type of limestone. Moving next to the last one. देखिए जितने भी names लिखे, these all are the types of rocks. The last is dash stones are bubbles of the volcanic lava.
ओके। तो देखिए जब लावा निकलता है ज्वालामुखी के फटने पे तो कुछ बबल्स, क्योंकि जब पानी बहुत में बबल्स निकलते हैं वैसे ही लावा भी बहुत गर्म होता है, एंड जब उसमें से जो बबल्स निकलते हैं और जब वो बबल्स ठंडे होते हैं, ओके, तो वो एक पत्थर की शेप ले लेते हैं। सो व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड प्यूमाइस। ओके, सो द बबल्स of the volcanic lava, when it cools down, it takes the shape of a rock, that is known as pumice. Pumice, pumice. Okay, so these are the different types of rocks that we have revised in this chapter. Okay, so with this I'm just ending the session here only, so I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a great day.